educator at Divya Jyot. I welcome you all to our series of webinar, The Knowledge Tree. The discussion we have today with you all is on awake and take control on your diet, nutrition, and wellness. In this modern age, all of us are living a very stressful and fast life. We are always looking for shortcuts, forgetting the fact that diet, nutrition, and wellness play a vital role in our life. So during the session, if any of you have any questions, please feel free to write it in the comment box. If time permits, our eminent speaker will definitely address it. Today we have with us Mr. Nilesh Soni, who will guide us on our diet, nutrition, and wellness. Before I get on with the session, I would like to introduce Mr. Nilesh Soni. Mr. Nilesh Soni has been associated with healthcare from last 35 years. He has worked in Kenya, Tanzania, Mozambique, and UAE other than India. At present, he is working with Shalby Hospitals. He is a certified cancer nutritionist, a certified renal nutritionist. He has a diploma in healthcare and nutrition education from IGNU, a diploma in diet planning from Fab Academy, USA. So you can see such an eminent speaker today for today's evening. And yeah, I feel really happy to see many of you have joined us today on a Saturday evening. That shows that you are really health conscious. Sir, a very warm welcome to you for today's Thank webinar. you. Over to you, sir. Thank you very much, madam. Uh, I am very much thankful to you, to Divya Jyot School, as well as Director Dr. Eva Bhagat, madam, uh, and Principal, madam Thakur. So, first of all, it is the time where the people must have planned their enjoyment, but means compromising to their enjoyment, they are joining with us. It's I first of all True, sir. thank you very much to the participants also. First, I am audible properly. Yes, sir. You're on. Okay. So, if you permit, we can start our session. It's Yes, sir. our title Definitely. is our title today is awake and take control of your diet, nutrition, and wellness. So our topic itself speaks that what we are going to cover today. Uh, I think this may be my more than 78th lecture, but in most of the lecture, Oh my God. I have, I have told everybody first that whatever I will speak, which will not be totally new to anybody. Most of the things you must be knowing. So it is, we can say that it is an awareness session, and at least one or two points if you carry from today's session, it will be helpful to you to your good life. Uh, So sometimes it so my happens that we are aware of it, but when someone recollects and reminds us about it, we yes. tend to do So it during again. this, We yes. know these things, but we don't So follow it. So if someone tells us it again and again, it we need to do it. okay, madam. So I have tried all these the aspects and points in a such a way that, see, say for example, people or everybody knows that we have to drink enough water, but there are a lot of myths and Correct. misunderstanding and questions in their mind. So I will try to cover that point so that your concept of eating or drinking water adequately will be clear today. This is a one example. So let's start. Let's observe the health, not only wealth. So today, most of us Right. are behind the money, and it's not bad, but at the same time, our life is much more important than anything else, which is given or gifted by the God. So all of us knows that in 1960 or before that, we were having a big container of the food.
means grains in our houses, right? Uh, but it is becoming now small, and the medicines boxes are becoming big now. I think people are agree with me. In turn, 2021, now we have in each house we will see that so many the medicine boxes. So one or other people of a family or member of the family must be suffering from the lifestyle disease, and our session will be mainly on that only. Uh, Most of the age of 40 people are suffering from diabetes, BP, thyroid, cholesterol, arthritis, acidity, painkillers, and allergies. So the question is that our ancestor, maybe my grandfather, my grandmother, or their father, mother, were not suffering all from this disease. So people are having the question that why in the last 20, 30 years it has happened. So we will try to understand that the reason. If you know that in before 1950s, there were the problem of food availability. The starvation was the major problem in most of the country, even in India. ભૂખમરો આપણે જેને કહીએ છીએ, it was a very much the biggest Correct. issue of the India also. Today, there are some of the countries of Africa, the people are suffering from the starvation and they don't have enough food to eat also. So versus that, if you see today in our country and all developed country, over availability of food has become a major problem. So earlier we were not having enough food. Now today we are having a lot of food available. Before 10 years, there were a problem that if you want to do something or if you want to prepare a dish, there is a big procedure that we have to grind it at home and grains, and then we have to prepare everything. Even people were just grinding masalas at home also. And it was Yes, sir. taking so much time because there were no availability of the LPG gas or gas pipeline like this. So I'm just explaining so that you will visualize everything in your mind that today you just click the mobile button and within 20 minutes pizza will come to your place. Am I right? Yes, sir. Very true. Yes. And that is what people So want these days. Shortcut. right, shortcut, yeah. So shortcuts has made us uh, made our discipline of eating and our means what you call the system of eating very bad, and that has outcome is almost obesity, anemia, weakness, poor sleep, poor immune system, poor vision, poor muscle weakness, or poor digestion. See, these are the what I am listing here. Most of the people don't go to the doctor sometimes. So our focus will be there that before going to the doctor, what we have to take care so that we should not approach to the doctor. So I am not against the medical because I am in the hospital. Hospital is the most important. Doctors are most important. Medicine, surgery, everything is most important. But at that time when it is needed. So if this wellness or the our care will be working as a guard, security guard. If we take care of that, then we will not be able to enter into the health issues. Let me explain health into two or three sentence. So there are three type of health. One is the physical health, the second is the mental health, and third is the social health. And all three health is connected to each other. Let me give the example. My speed is okay, madam. I am going okay. Yes. Yes, sir. Okay. We are So understanding. first is physical health. So let us take an example. If the person is suffering from knee pain,
So then he may, and the person will ignore that knee pain. So he will have a lot of pain at night also. So this knee pain is a physical problem, health problem. And if the pain is consistent at night also, then he will have a problem of a sleep also. Uh, and due to sleep problem, we can consider this sleep problem is a mental problem. The same way, if the patient is or some person is suffering from anxiety or depression or something, this is a mental issue, right? So it will create a problem for his physical health also. So he will not be able to sleep. So these are the connected. The same way, social health is what? So if you are not okay by, see, because if the mind also is involved. If you are not okay, if you are not happy in your life, your surrounding people will not be happy. हमने देखा है बहुत बार कि जैसे हमारे घर में कोई एक बीमार आदमी है तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है. जैसे कोई घर में हाँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड एज पीपल, इवन आपका बेटा बेटी या तो आपका ब्रदर सिस्टर अगर बीमार है, देन एवरीबडी विल बी very much disturbed. I don't say the disturb, but they will be concerned and there will be a lot of trauma for all the people. So if we take care of this wellness, and if we means strong, make our wellness very strong guard, then our health will be okay. So I will start with I will turn my topic to the real what is wellness. So everybody, we okay all are eating every day. So God has made our body in such a way that our body needs nutrition. God has not made our body to just eat, which is not nutritious, and just to feel your hunger. But it has changed in such a way that people are just fulfilling or means satisfying the hunger, but nutrition is far away. It is becoming far away from our overall requirement. So mostly there are two type of nutrients a body always need. One is a macro and one is a micronutrients. So we'll not go too much deep into it, but I will just brief it. Macro is means first of all, let me tell you why we need the food. So these are the four groups in which I have divided. The carbohydrate and fat is the first important macronutrients. The carbohydrate and fat helps us to gives the body energy. अगर कोई आदमी घर पे सोता है, अगर कोई भी काम नहीं कर रहा है या तो उसका कोई भी एक्टिविटी नहीं है, फिर भी उसको एनर्जी तो चाहिए. बिकॉज इसका मीन्स बीएमआर मिनिमम के हिसाब से उसका कुछ कैलोरी तो चाहिए. जैसे उसका हार्ट बीट होता है, उसका हाथ ऊपर नीचे कभी होता है, इसकी आई ब्लिंक होती है. दिस ऑल द मूवमेंट्स आल्सो नीड द एनर्जी. जैसे हम हमारी गाड़ी में फ्यूल डालते हैं और फ्यूल के बिना गाड़ी नहीं चलती है, द सेम वे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट वी कंसीडर एज अ फ्यूल ऑफ द बॉडी. So this is the macronutrients. Second is a protein. Protein is much more important. Again, we are going away from the total requirement of the protein. In one group of the people, they are very much far away from the requirement of the protein, and one group of the people are loaded more with the protein. These two, the sides are very dangerous. So we have to balance it and जो हमारा खाना है, कोई भी यहाँ का ले लो या तो साउथ का ले लो या तो नॉर्थ का ले लो, ऑल द जो स्टेपल फूड जो हमारा है वो बैलेंस ही होता है. हमने बहुत सारे क्या एक्सपेरिमेंट कर करके उसको इम्बैलेंस कर दिया है.
because of our taste and lifestyle. So protein builds the blocks of the body muscles, and it is helping for the hormone also. Third is we call it So micronutrients. according to you, protein has to be had according to our staple, sir. Sorry, madam. Hello. So we should have proteins according to our staple diet. That's what you're trying to tell me, sir. Yes, I will come to next slide is almost that also that means protein guideline that how much we should have, right? तो स्टेपल डाइट जैसे हम गुजराती Okay, sir. खाना लेते Okay. हैं तो पहले पहले गुजराती खाने में आप देखोगे तो कठोल जो बोलते हैं ना मूंग मठ चना तुअर वाल क्या बोलते हैं वो सब कुछ ना कुछ रोज बनता था बट अभी आज है वो दाल भी कभी हाँ, हफ्ते में एक दो बार बनती है लोगों के घर पे so I'm giving just general example it's not for all so this is one micronutrient is vitamins and minerals which help you to for the health of bones teeth nail healing of wounds hair एंड बूस्ट द इम्यून सिस्टम अभी कोरोना के टाइम में हर एक लोग ने एक एक्सेप्ट कर लिया कि अपनी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी होनी चाहिए वी हैव टू बी वेरी मच मीन्स strong with the immune system and the people started a lot of things to do to improve their immune system but it's not a joke that you just switch on switch off for the immune system it is a collective of so many things and I will try to cover in this lecture also that how you will improve the immunity तो पीपल काढ़ा पी लिया तो नींबू पी लिया विटामिन सी ले लिया विटामिन डी ले लिया जो भी है तो पीपल वर ट्राइंग टू जस्ट सेव themselves for the to protect them from corona but then and then many people fail to just protect themselves because immunity is not only eating there are a lot of other aspects also so and another is water and above means all above is a water to regulate body temperature and maintain the other body functions am I clear till madam Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आप बराबर है. सो हमने जो देखा जो फूड ग्रुप्स उसमें से ये आप लोगों को बेसिक लगेगा कि वी आर टॉकिंग वेरी फ्रॉम द ग्रास रूट बट इट इज मस्ट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस अगेन अगेन एंड अगेन सो जब भी कोई डाइट की बात होती है ना तो जैसे इम्यूनिटी की बात चलती थी जैसे कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो तो पहले तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन घर पे जाके बोल देते हैं वाइफ को कि आज से मैं सलाद ही खाऊंगा आज से मैं सुबह में आधा घंटा वॉक करना चले जाऊंगा so these are the things were by their own they decides and they don't understand फिर कहीं डाइट की बात होती है तो लोग बोलते हैं कि वी हैव टू स्टॉप कार्बोहाइड्रेट वी हैव टू टेक ओनली प्रोटीन कीटो डाइट लेना चाहिए सो these are the misconception unless you are guided by the proper nutritionist dietitian or your doctor don't do experiments on your body otherwise it will harm you like so much so type of and sources of carbohydrate to understand is very important लोगों को लगता है कि दाल अरे ये राइस है या तो रोटी है वही कार्बोहाइड्रेट है ब्रेड ही कार्बोहाइड्रेट है बट आपको मैं और कुछ भी बताना चाहता हूँ कार्बोहाइड्रेट के थ्री पार्ट है वन इज अ स्टार्च विच इज राइस होल के व्हीट ट्यूबर मीन्स वो जो आलू होता है आपका या तो स्वीट पोटैटो होता है वेजिटेबल्स एंड सर्टेन फ्रूट्स हैव द स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट सेकंड जो मैंने रेड में लिया हुआ है आई थिंक यू विल बी एबल टू सी द स्लाइड विच इज द मोस्ट डेंजरस विच इज हैविंग नो ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू एंड मोर हार्मफुल इज द शुगर सो आज हम और हमारे बच्चे बिकॉज आई नो दैट I was told that there are a lot of parents and even students are also going to join. So for them also it is most important. Sugar, white or white bread, biscuits,
बिस्किट्स के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग ये बोलते हैं कि ये फाइबर वाला बिस्किट है, ये हेल्दी बिस्किट है, बट आई एम सॉरी, अनलेस यू आर एलिजिबल, मेरे हिसाब से ये वर्ड बरोबर है, अनलेस यू आर एलिजिबल डोंट ईट एनी बिस्किट, any like pastries, sweets, ice cream, fruit juice, soft drinks, sweet. Eligible in what way, sir? एलिजिबल मीन्स मैडम वो अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ अगर अलाउ करती है, या तो आपका न्यूट्रिशन अदर थिंग्स में प्रॉपर है, देन एंड देन यू कैन ईट बिस्किट, बिकॉज आप अगर एक बिस्किट का पैकेट खत्म कर दोगे तो आपकी भूख तो मिट जाएगी, योर हंगर विल बी सेटिस्फाइड, बट एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन विल बी क्वेश्चन. So that is why I am telling eligible. So Okay. don't replace your meals, or don't replace your meals with biscuits all the time. लोग बोलते हैं कि मुझे थोड़ा स्वीट खाना है तो आज मैं एक थोड़ा सलाद कम खा लूंगा या तो रोटी कम खा लूंगा. But these are the things which I have to balance. That will I will also talk. So fruit juice, soft drinks are the most dangerous. People are again and again telling, but it is allowed only to the people who are be able to discipline their next food or next meal or next 2 3 days or like this. So these two, I have starch, I have made it in yellow, that sugar I have made it in red, but fiber I have made in especially green, to just get the understanding that which is most important, the carbohydrate for our body. There are two type of fibers in available. One is the soluble fiber, another is insoluble fiber. So approximately more than 25 gram fiber everybody have to consume per day. Unfortunately, our consumption, our eating pattern does not include that much fiber in a day-to-day food, and that has become the problem to us. So fiber comes into the pulses, oats, dalia, whole grains, fruits, vegetables, flax seeds, almond, and finally, if you cannot do anything with these, then take isabgol. Because fiber is the see So you, insoluble fiber का रोल ये है कि वो डाइजेस्ट नहीं होता है, but it can help you, fiber can help you to more so much extent to control the diabetes, blood pressure, or heart disease also. Yes, madam. yeah. I was just asking the question about Isabgul, but you already answered. So it's fine. Yes. Okay, sir. I will try to answer all your questions which are there in your mind, but then and then you are allowed. So, second food group I was talking Okay. is a role of protein. Protein is who builds and repair tissue, body enzymes, hormones, builds the blocks, bone muscles, cartilage, skin, and hair. See, today everybody are telling that my hair is falling, and my thin hair has become thin. All these female, I don't know how many are joined, but most of them, more than 90% have the same problem, right? But if I ask him that how much protein you are taking per day, whether you are vegetarian or non-vegetarian, then the content will be very less. It's possible. At least as a guideline, it is not 100% for all. It varies from people to people and activity and all. But mostly zero point 0.8 gram per kg body weight protein we should have. So if you consider our 50 kg body weight, then we should have 40 gram protein per day. But I'm sure we may not be taking it. Anyway, this is just to awake you. Our title is such कि awake and take control. Protein in muscles is 43% of the average. So here I would like to point out one thing which is very important. आपके घर में अगर 60 प्लस का कोई भी मेंबर है,
आप ऑब्जर्व करते जाना कि पापा यार मम्मी का या हाथ या तो पैर के मसल्स बहुत सॉलिड थे बट अभी शायद डिप्लेट हो गए, वो तो बहुत कम वीक लग रहे हैं. सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज दे नीड द इनफ प्रोटीन. सो उसको नहीं मिलने के कारण से वो लोग सी आप लोग को लगता है कि वो दुबले हो गए, वो उसकी चर्बी चले, बट वो फैट नहीं जाती है, प्रोटीन डिप्लेट होता है. सो दे आर सी जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन के ऊपर भी पूरा लेक्चर है उसके, तो देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. तो उसके लिए हम बहुत बात नहीं करेंगे, बट अगर आपको ऐसा लगता है देन यू मस्ट कंसल्ट योर फिजिशियन और dietitian nutritionist to just get his protein requirement, understand his protein or her protein requirement and follow that. Source of protein, I think almost everybody must be knowing that meat, chicken, fish, eggs. Egg is a very good protein which contain PDCAS 1. PDCAS 1 is our term in our term. So it is if you are non-vegetarian, if you are vegetarian, if you can take eggs, it is a very good protein. बट डोंट वरी, सी प्रोटीन के जितना ही आपको राजमा भी अरे सॉरी एग्स के जितना ही राजमा से प्रोटीन मिलेगा, तो आप उसके लिए नॉट टू वरी. डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन हमारा बटर चीज के सिवाय बहुत कम हो गया है. या तो हमारे बच्चे सिर्फ दूध पी के चले जाते हैं, या तो उसके बाद में अदर थिंग्स मीन्स पनीर या तो दही है, बटर मिल्क है, उसका रेगुलर कंजम्पशन होना चाहिए. pulses and pulses and legumes are also most important sources of lentils. All type of dals are important source of protein. विच वी हैव टू सी. हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई डाइट कंसल्टेशन में आता है, मैं पूछता हूँ कि आप कठोल खाते हो, उसकी भाषा में पूछता हूँ कि भाई તમે कठोल खाओ છો, तो कि हाँ क्यारे कभी कभी ये कभी है वाइफ बनाती है तो खाते हैं, ऐसा सब मीन्स दे डोंट हैव स्पेसिफिक दैट कि नहीं मैं 3 बार हफ्ते में लेता हूँ, इतनी क्वांटिटी में लेता हूँ. ठीक, कठोल की बात करते हैं तो सब बोलते हैं कि वो फणगाएला मग क्या वो क्या स्पाउटेड 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 से अटक जाते हैं. स्पाउटेड नहीं लो चलेगा, स्पाउटेड इज अ वेरी गुड सोर्स, बट कुछ नहीं है तो उसकी सब्जी बना के भी खाओ ना रोज. हफ्ते में मिनिमम 3 to 4 टाइम खाना चाहिए. जब कर्ड की बात करते हैं तो कि अकेला कर्ड अच्छा नहीं लगता है, तो कर्ड के बहुत ऑप्शन है. उसमें आप बूंदी डालो यार, उसको छोका मार के खाओ, जो भी करो, उसका रायता बनाओ. मीन्स यू हैव टू हैव दिस in your daily diet. Chia seed is a very Variations, good. different variations. Hello. Yes. Variations of the curds Variations of the in curd. different things. That's what you're trying to Yes. say, है ना? यहाँ बहुत सारी मदर्स हैं, तो मैं वो सजेस्ट करूंगा कि आपके बच्चे को कोई भी कंपल्शन करने से अच्छा है कि जस्ट हैव सम इनोवेटिव टेक्सचर्स, इनोवेटिव टेस्ट दे के उसको चीज देंगे तो वो जरूर खाएगा. बच्चा को टेस्ट डेवलप करना होता है, तो उसके लिए अगर आपको ये अच्छा लगता है कि डेयरी प्रोडक्ट में सी जैसे को होता है ना कि भाई पिज्जा है तब पिज्जा खाते हैं, तब वो उसमें जब टॉपिंग्स आया तो पनीर खाया, बरोबर है, या तो होटल में गए तब पनीर की सब्जी खाई तब आया था. तो ऐसा मत करो, आप एक पैटर्न बना लो कि हफ्ते में 3 बार ये बनेगा, रोज बटर मिल्क होगी, या तो कर्ड कोई फॉर्म में होगा, या तो कुछ नहीं है तो आलमंड लेंगे रोज. ये जितनी पैटर्न बनाओगे और हैबिट बनाओगे, इतना आपको बेनिफिट ज्यादा दिखेगा. So spirulina is one of the biggest source of protein. Soybean is also a very good source of protein, but soybean to the male, I will tell to just have portion by taking with a proper guideline only. So another thing is, see, today we are suffering not with only the deficiency of protein or carbohydrate, mainly that micronutrient deficiency has gone
beyond our limit, and we have to take care of that by all means or ways, because this is the most important. Micronutrient का क्या, आप कोई भी विटामिन का टेबलेट का लेबल पढ़ोगे तो माइक्रोग्राम मिलीग्राम इसमें छोटा छोटा है, 1 IU मीन्स 3000 IU ऐसा ही सब होता है, बट दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, skin and hair, heal wound faster, boost immunity, repair cellular damage. एनी ऑफ द सर्जरी के बाद भी आपको बहुत जरूरत है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम. So today most common, if we ask, madam, if I ask you that which is the most common deficiency, आप क्या बताओगे मैडम विटामिन में? विटामिन सी सर, अभी तो वही पैंडेमिक में वही दिमाग में भर गया है कि विटामिन सी लिया करो. अच्छा, उसके सिवाय जो बहुत कॉमन चलता है लोगों को कि ये इसका डेफिशिएंसी है, वो क्या है? विटामिन B12, D3. Yes, B12 and D3 is most common, has become. Why? Sorry? I have asked this question very intentionally because after the first wave of the COVID, one lady came to me for the consultation, and she was explaining some complaints, and it was surprise to me. Then I asked her, "Madam, आपका सब टेस्ट हो गया है?" तो मुझे, बिकॉज हेल्थ चेकअप में जब टेस्ट के बिना देखते हैं तो प्रॉब्लम होता है, तो देन शी केम विद अ फाइल. So her vitamin D3 was 172 or something. So I was shocked. I just asked her, "Madam, how come?" तो हस्बैंड ने बोला कि सर मैं तो उसको पिछले 1 साल से विटामिन डी दे रहा हूँ. सो प्लीज, इट इज वेरी मच डेंजरस. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. These are the fat soluble vitamins. So if you go beyond that limit, then it will store in the body and harm you more than the benefits. So same way, vitamin C also is much more harmful when it goes. Also, sorry. So I think somebody asking. No, sir. No, continue. Okay. So all major questions we will take after, right, madam? So vitamin C. Yes, sir. Yes. The overdose of vitamin C is also dangerous. So don't continue unless your doctor advise or nutritionist advise. So source of vitamins, minerals, we all knows, fruits, all vegetables, salad, milk product, cereals, fatty fish, fresh sunlight. So विटामिन डी भगवान ने ऐसा दिया है कि जिसके लिए आपको कोई गोली खाने की भी जरूरत नहीं है. आपको सनलाइट 15 मिनट 20 मिनट का पर डे थोड़ा एक्सपोजर लेना है स्किन के ऊपर. अभी क्या हो गया है कि जैसे हमारी बात करते हैं तो हम 9 बजे यहाँ पे ऑफिस में पहुंच जाते हैं, हमारी गाड़ी है वो अंडरग्राउंड पार्क होती है. आप सोचो कितना जीरो एक्सपोजर है सनलाइट का. लिफ्ट में से आदमी उतरा, कोई भी एग्जीक्यूटिव बैग लेके फटाक से वो -1 में गया, उसकी गाड़ी ली उसने, फट से वो गया ऑफिस में, वहां गाड़ी पार्क कर ली. पॉसिबल है कि वहां पे भी तो अंडरग्राउंड पार्किंग है, तो वहीं से वो लिफ्ट में ऑफिस में जाके बैठ गया. रात को 8 बजे तक उसने काम किया, बरोबर, और संडे को आराम किया, बरोबर. तो आप बताओ उसमें उसका सन एक्सपोजर कहाँ रहा? ठीक है. So unless you will have proper sun exposure, you will definitely be deficient with vitamin D. And we have served in all our in Ahmedabad, all 4 units, we served number of patients of COVID, and we tried to find out that the vitamin D deficiency was one of the reason also, not only but one of.
So this was about this. Whole grains are important, nuts are important, sprouts are important. Now, when we are talking about nuts, either people are taking without any condition. वो काजू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं तो उसको क्या फ्राई करके खाती हूँ, ऐसे सब जब जवाब आते हैं. बट हैंडफुल ऑफ नट्स आर इम्पोर्टेंट. अभी आता है कि वो क्या है कि सनफ्लावर सीड खाया कि या तो पंपकिन सीड खाया, बट वो हैंडफुल वो भगवान ने दिया क्योंकि दिस नट्स आल्सो कंटेंट फैट. So it is a healthy fat, but we have to take care of that. So now is very important. बहुत सारे मेरे लेक्चर्स में यही तो क्वेश्चन आता है कि हमको कौन सा तेल खाना चाहिए. वो एक बहुत ऐसा कोई लेक्चर नहीं हुआ है जिसमें ये सवाल लोगों ने नहीं पूछा है. ठीक है, आप लोग भी पूछ लेना. तो टाइप एंड सोर्सेज ऑफ फैट में यहाँ जनरल बताना चाहता हूँ. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट है. बटर जहां मैंने क्रॉस मार्क किया है वो बस बटर, चीज, पाम ऑयल, cream, coconut oil. Okay, coconut oil at some extent, but these are to be take as a saturated fat. नाउ मैं यहाँ मेरा आंसर यही रहता है कि आप कितना कौन सा तेल खाना है वो मत पूछो, आप इतना डिसाइड करो कितना तेल खाते हो. See, I am giving example how oil is a dangerous when it fries again and again. क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो हम बाहर का खाना खाते हैं, अनहेल्दी अनहेल्दी जगह से कोई फरसाण या नमकीन या ऐसी चीजें खरीदते हैं, तब प्रॉब्लम होती है. यहाँ मेरे हॉस्पिटल में भी ऐसा है कि हमारे किचन में जो भी ऑयल एक बार हो जाता है उसको हेलो, इज इट ओके? Yes, sir. Yes. My speed is okay, मैडम? Yes, sir. हाँ सर, बराबर है. ओके. सो यहाँ पे जो भी ऑयल है वो जैसे हमारा बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट होता है, द सेम वे वो कलेक्ट करने के लिए एजेंसी है. वी आर नॉट इवन अलाउड टू जस्ट pour it in the drainage also, because they are considering it is a poison. सो जब हम ये तला हुआ बहुत तला हुआ जो एक ही बार जो भजिया ये लोग तलते हैं तो वो खाते हैं, सो वी आर एडिंग द पॉइजन इन अवर बॉडी. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. ये फूड के ऊपर आ गया, डाइट के ऊपर आ गया. डाइट सो इसका समराइज मैं ऐसे करूंगा कि वी हैव टू हैव अ बैलेंस डाइट इन अवर डे टू डे प्रैक्टिस. जो भी आप कर रहे हो उसको रोज के लिए करो. लोग बोलते हैं कि जर्मिनेट मीन्स वो बादाम को भिगो के ही मैं तो खाऊंगी, बाकी नहीं खाऊंगी. बट अभी आपका इतना प्रॉब्लम है, आप भूल जाते हो अगली रात को भिगोने के लिए, तो दूसरे दिन नहीं खाते हो, तो वो लॉस ज्यादा है. उससे अच्छा है कि खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में जाके कुछ तो बेनिफिट करेगा. So whatever you do it for every day. Just have a healthy practice of eating. जैसे आप जैसे कोई भी फाइनेंस एडवाइजर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आप एक सिस्टमेटिक हैबिट डाल दो कि हर महीने में इतने रुपये बचाऊंगा. द सेम वे ये सिस्टमेटिक आपकी जो हैबिट रहेगी तो वो वही आपको बेनिफिट करेंगी. आपने हफ्ते में एक बार शायद नट्स खा लिए तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. स्पेशली द पीपल हु आर मोर देन 35, तो वहां पे आपको रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है. पहले का खाया हुआ नहीं चलेगा उस टाइम पे. टू मदर्स आई हैव जस्ट स्मॉल ब्रीफ सजेशंस कि बहुत सारी मदर मैंने देखा है कि वो सुबह का 8 बजे का क्लास है तो सिर्फ दूध पिला के या तो ऐसा ही कुछ आई डोंट नो चिप्स बिप्स खिला के बेटे को बिठा देते हैं. तो प्लीज डोंट डू इट बिकॉज द मॉर्निंग टाइम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. बिकॉज जो बच्चों का ब्रेन उस टाइम पे बहुत चलने वाला है, और अगर उसका रात का खाना 9 बजे रात को हुआ है और सुबह को 9 बजे उसको पढ़ने के लिए बैठना है या क्लास, इफ यू हैव टू अटेंड द क्लास एट 9 o'clock,
his brain should be full of means nutrition. सो कुछ नहीं है तो कुछ नट्स दे के या तो कोई ब्रेकफास्ट की हैबिट डालना बहुत जरूरी है। वो आप खास ध्यान रखना। या तो दूध में, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि दूध में ये पाउडर डाले वो पाउडर डाले, तो डालो, बट वो जरूरी है। मीन्स इफ द एम्प्टी स्टमक, बेटे को या तो बेटी को मत, मीन्स डोंट अलाउ देम टू जस्ट स्टार्ट स्टडी। So this was just suggestion. It's a big counseling part. I'm just suggesting only because we have not the diet in general. We have a preschool diet, we have school going diet, we have adolescent diet, we have geriatric diet. All the diets are different. So we have to follow that. So now let us talk something about wellness. It's a very simple. I am giving you in one slide only that the clue. How can you make your weight loss, or how can you maintain your weight? It is all about the balance of your intake and energy, what you are using, calorie, how much you are using. So if you can balance it well, your weight will not be too much. At the same time, your what do you call that? You will not be able to see, either you have to burn your calorie, or you have to eat less. Now there is another concept. People are telling that I am going to gym for 30 minutes, 1 hour, and I am unable to uh, reduce my weight. It's possible because जो भी जिम में जाते हैं वो कल जाके एक बार देख लेना कि 15 मिनट आपने मॉडरेट स्पीड पे आपने ट्रेडमिल किया है, तो आप 120 से ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं कर पाओगे। एंड अगर वो जिम जाने के बाद अगर क्लब में आपने कुछ ऐसा खा लिया, तो यू विल ऐड 300 कैलोरी इन जस्ट 10 मिनट्स। So this is the balance you have to take care of. That if you are conscious, you will be able to maintain. So weight gain is energy, the balance between energy expenditure versus energy intake. So yeah, I think it's a simple slide you will be able to understand. There are a lot of things to counsel, but ये मैं एक स्लाइड में आपको जस्ट आइडिया दे देता हूँ। सेकेंडली वेलनेस में जो आता है, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ बेबी विच इज स्लीपिंग वेरी कामली। आपके घर में भी बच्चा है तो आपने देखा होगा कि वो लोग की स्लीप है एकदम काम एंड एकदम कूल होती है, बिकॉज दे आर डोंट हैव एनी टेंशन। नाउ स्लीप के बारे में मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। अभी पीपल आर थिंकिंग दैट कि एवरीबडी आर टेलिंग दैट वी शुड हैव गुड स्लीप, उसमें कोई नया नहीं है, बट आई वुड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। एक तो ऐसा होता है कि पीपल आर नॉट गोइंग टू द बेड ऑन टाइम। एक तो ये हो गया कि देयर आर द यंगस्टर्स और द पीपल हु आर out of the house for up to 2 o'clock, go to the bed at 2:30, and then just have a 5-10 minutes on the mobile, and then they will start sleeping. And they have to reach to the office by 9:30. So tell me that who is responsible into that? Not your body. हम responsible है. Sorry. Correct. Yes, we are responsible for it. Yes. Uh, so my people are laughing that, sir, what concept you have taken. Good. So this is one reason. Second reason is you are going to the bed at 10 o'clock, but you are not getting sleep up to 2 o'clock. So this is some problem. So there are a lot of issues of sleep disturbances, and recent survey is telling that sleep deprivation is a major issue of all our health, बिकॉज आप जब सोते हो तभी बॉडी का रिपेयरिंग वर्क होता है। मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ, रिपेयरिंग वर्क के लिए आप टाइम नहीं दोगे, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज। इट कम्स टू योर cortisol level will be high, so you will eat more. Your means lot of inflammation will be there in the body, and your mind will not work properly. You will not be able to concentrate properly. There are lot of issue we must have observed in our life.
सो स्लीप के लिए आप डिसिप्लिन रखना, टाइम पे चले जाना, सोने के 2 घंटे या तो एटलीस्ट 1 घंटे के पहले नो अल्कोहल, नो सिगरेट्स, ऐसे तो लेना ही नहीं है वो तो, बट फिर भी नो जूसेस और नो लाइक टी कॉफी और हैवी खाना और ऑयली फूड और समथिंग लाइक दिस। बिकॉज अगर 2 बजे आपकी नींद खुल जाती है तो आप समझ लेना कि आपको ज्यादा एसिडिटी होती है, वो पेन होता है आपको मालूम नहीं पड़ता है, बट एसिडिटी के कारण आपकी नींद खुल जाती है, एंड वंस इट इज डिस्टर्ब यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप इट प्रॉपरली। क्योंकि नींद में ऐसा नहीं है कि 8-10 घंटे प्यार प्यार से सोना जरूरी है। फॉर स्लीप योर 4 hours sleep is sufficient if it is a sound and real means pattern of a sleep is maintained. So there are a lot of things to say on the sleep, but our time doesn't permit that much, so I'm going little fast. Second is wellness concept is drink sufficient water. अभी लोग बोलेंगे मैंने उसमें क्या नया बताया, वो तो बहुत कॉमन है दैट आपको पानी पीना चाहिए। लोग बोलते 3 लीटर पानी पीना चाहिए, 4 लीटर पानी पीना चाहिए, कुछ भी मीन्स वॉट एवर। See, but there are difference. Like the person who is working in the कोई बिल्डिंग बन रहा है तो ही इज वर्किंग देयर एंड ही इज इन द हैवी हीट, उसका पानी का रिक्वायरमेंट अलग रहता है, और वी आर सिटिंग इन एयर कंडीशन, तो आवर रिक्वायरमेंट विल बी डिफरेंट। सो हाउ टू डिफरेंशिएट? सी नॉर्मल गाइडलाइन ये है कि पहले तो आपके आपके पर 20 kg यू शुड हैव 1 लीटर वाटर पर डे or almost any of the liquid. This is minimal, but if the people who have visited UAE और मिडल ईस्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ के यूरिनल में एक स्ट्रिप लगी होती है, कलर स्ट्रिप, which shows your urine color guideline. So if your urine color is dark red or dark yellow or reddish yellow, then you should have more water. This guideline I am telling you to just observe how much water you should have, this guideline. बट एट द सेम टाइम सी हम पानी क्यों नहीं पीते हैं? सी सबको मालूम है कि पानी पीना चाहिए, बट बहुत हमारे ऑफिस में भी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई सिस्टर या नर्स को मैं पूछता हूँ कि बेटा आज तूने कितना पानी पी लिया, तब बोलती है सर मैं आज तो आई एम सॉरी बट मैंने 2 ग्लास से ज्यादा नहीं पिया है, बिकॉज दे डोंट रिमेम्बर। उसका कारण क्या है? जैसे घर में एक बच्चा है तो वो अगर कोई खिलौने से खेल रहा है then he will not remember, और बच्चा को मालूम नहीं पड़ेगा कि पानी पीना है या तो खाना खाना है, वो तो कंटिन्यू करेगा अपना एक्टिविटी, सो मस्त है उसमें। सेम वे भगवान, ये अभी जो मीन्स मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास इतने खिलौने आ गए, मोबाइल टीवी या तो चैटिंग या ये सब इतने आ गए हैं, लैपटॉप ये सब, तो उसमें हम खेलते रहते हैं, तो वी डोंट रिमेम्बर व्हाट इज वाटर। वाटर की जो प्यास या तो थ्रस्ट है वो हम भूल जाते हैं। So let us make ourselves conscious to have enough sufficient water also. वेलनेस के कंसेप्ट में है नो टोबैको, नो अल्कोहल एंड रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट एंड शुगर। इसके ऊपर तो बहुत लंबी है, बट आई एम जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग हियर। एक्सरसाइज इज मस्ट एवरी डे। अगर आपने कोई भी एक अभी 15 लाख खर्च के कोई एक नई गाड़ी लाके रख दी घर पे और उसको आप 3-4 साल तक नहीं चलाओगे तो उसकी हालत क्या होगी? सिमिलर all the parts of our body need movement. So लोगों का यही एक क्वेश्चन रहता है कि सर मैं सुबह में क्या उठ नहीं पाता हूँ, या तो मेरा शेड्यूल ऐसा है कि आई डोंट हैव टाइम टू एक्सरसाइज। सी आपके बॉडी को, आपके बॉडी पार्ट्स को जस्ट मूवमेंट करने के लिए आप या तो इफ यू आर ऑन द बेड और इफ यू आर ऑन द सोफा सेट और देन चेयर और एट होम, एनी प्लेसेस यू कैन जस्ट मूव फॉर 15-20 मिनट्स। उसमें वॉक की जरूरत नहीं है, आप हाथ पैर हिलाओ कुछ भी करके। मैं तो बोलता हूँ सोफा में बैठ के भी हिलाओ टीवी देखते देखते, वो भी तो एक एक्सरसाइज ही है, बट वी कॉम्प्रोमाइज दैट।
अच्छा, another concept what we have found out that आपकी अगर नींद ठीक नहीं हुई है तो आपके सुबह के 2 घंटे अच्छे नहीं जाएंगे। इसकी वजह से आपको वॉक करने का मन नहीं करेगा, सुबह की एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपकी नींद ठीक करो, देन देखो सुबह में आपको चार्ज कितने होते हो और आप वो एक्सरसाइज करते हो कि नहीं। So this is the concept of exercise. There are a lot of other things also. Aerobic भी घर पे कर सकते हो, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस है, आप एरोबिक करो घर पे चलेगा, गरबा करो तो भी चलेगा, whatever you want to do. So second important, most important is meditation also. Meditation इसलिए है कि lot of negative energy per day we are carrying and getting through so many sources. वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू मेडिटेट एवरी डे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट। कहीं पे भी बैठ के आप भगवान का, या तो यूट्यूब पे आप मोबाइल पे ओम लगा दो, ओमकार बस, और बैठ जाओ, आंखें बंद कर दो। दिस में बी सफिशिएंट फॉर यू। सो these are the wellness basic concept. Hope I think you must have understood what I was wanted to tell in general. अगर ये मेरे सेशन में अगर आपके कोई उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए। सर पहले तो आई थिंक द टेक अवे फॉर टुडे इज दैट हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न और सिस्टमैटिक हैबिट बनाना चाहिए। यस, है ना? यस यस यस। So that is the main takeaway for today. Okay, we have a question from Shriti Gandhi. How many times have we to eat oily food in a month, like bhajia, samosa? How many time? Yes. If she tells me that, if she tells me the age, or sorry, if she tells me her weight, then I can tell whether every day or only sometimes. सर एक जनरली बता दीजिए कि how much of oily food we can eat. Madam, actually I have in my lecture I have so 1 minute, madam. Yes, I was wanted to tell you that fat is also equally important in our diet, right? So if you are balancing your diet with a proper amount of fat, then it's okay. So if you ask me, then I will tell you that this much. If the thumb shows first this much only fat you have to take, but it's not possible. If you are just utilizing your calorie properly per day, then you can eat. But again, मैंने बोला है कि आप मीन्स बाहर का तला हुआ जो 3-4 बार वही तो फ्राई करते हैं उसको, या तो डीप फ्राई तो अवॉइड ही करो वंस यू आर, इफ यू आर ऑन द डाइट। यस सर आपने जो कहा जो ऑयल रीबॉइल्ड ऑयल है, यू आर आस्क्ड नॉट इवन टू थ्रो इट डाउन द ड्रेन, तो वो ऑयल को करना क्या है? हाउ डू वी डिस्पोज इट? इसको कैसे फेंकना है? जैसे आपने कहा फेंकना भी नहीं है। No, this I am telling you for the restaurant and hospital. This I have told you for restaurant and hospitals where we have a quantity very high, right? So and I was wanted to tell you that it becomes poisonous when we just once you make or fry it, something into it. Okay. So the next question ये है कि nowadays the new theory says half plate should be raw food, fruits, vegetables. So what is your suggestion? आपका क्या कहना है सर? Yes, if you take a portions, actually the balance diet is most important. So these micronutrients like vitamins and minerals, uh, for that not exactly half plate, but a possible fruits and vegetables and salad, you can take it up to half. There is no problem.
So it will be helpful to you. Okay. So the fruits, vegetable and We salad can will mix give you. fruits and vegetables, sir. Yes, fruits, vegetable and salad will give you the fiber, will give you the vitamins, minerals. Because you know that today that a lot of people are suffering from constipation, also hyperacidity, and there is a lot of alkaline or acidic food we are taking per day. So to make it alkaline, this will help. So I will say yes. Okay. Next question. There are so many methods of eating. Some say eminent fasting. Some suggest eating after every 2 hours. कौन सा अच्छा होगा सर? एमिनेंट फास्टिंग या हर 2 घंटे हमें खाते रहना है? नहीं ये सवाल भी बहुत आता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि वेदर इट इज ओके और नॉट, बट सी अगेन इट इज 100% under the guideline, because there are a lot of coexisting conditions, like person is a diabetic or person is having a kidney disease or liver disease or some hypertension. So by considering all this overall health, only we can suggest them they can take it intermittent fasting or not. हर 2 घंटे में खाना चाहिए। See, normally we suggest breakfast, then mid breakfast, then lunch, then mid evening, and then dinner. But in this like middle of lunch and dinner, we suggest only handful of things. बट लोग क्या करते हैं उसमें इतना, जैसे इवनिंग 4-5 बजे हो को थोड़ी भूख लग गई तो कुछ भी आया वो खा लेते हैं कि चलो दाबेली मंगाओ, वड़ा पाव खाते हैं, वो नहीं अलाउड है। Yes, sir. Next question, sir, would be how to avoid craving for unhealthy food items. हमें ना, जैसे आपने अभी कहा कि वड़ा पाव खा लेते हैं, दाबेली खा लेते हैं, तो वो एक क्रेविंग रहती है सब में, तो उसको कैसे अवॉइड करना होगा? ओके, उसके लिए हम जानना चाहेंगे कि क्रेविंग क्यों होती है। सी देयर आर 2-3 थिंग्स। क्रेविंग के पहले रीजन मैं बताना चाहता हूँ कि एक होता है कि जिसमें आपको जैसे आई टोल्ड दैट यू आर हैविंग ए स्ट्रेस, वन रीजन, जैसे आपको स्ट्रेस है, आपको तो उसके हिसाब से आपको जब भी कुछ हो तो कुछ खाने को मन करता है, दैट इज वन। सेकेंडली दैट somebody who is this is something which is what we have observed commonly, that somebody is a tobacco chewer or so smoker or something, वो लोग को क्रेविंग होती है। थर्ड इज आपका विटामिन मिनरल्स का कंजम्पशन या तो डेफिशिएंसी है तो उसमें क्रेविंग होती है। फोर्थ इज डायबिटिक, इफ यू आर डायबिटिक देन आपको ऐसा क्रेविंग होता है जब तुरंत से आपको कुछ चॉकलेट या स्वीट खाने को मन करेगा कि ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया। So to avoid the craving, we cannot sometime avoid the craving if you can observe the reason in your life that कि ये reason से मुझे craving होती है। If you make yourself conscious into it, then you will not get the craving. Or if you get the craving, then you should have a healthy food. Munching ऐसा रखो जिससे आपकी कैलोरी बहुत नहीं बढ़े, या तो शुगर नहीं बढ़े, या तो आपको दूसरा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ सर, तो वो ये क्रेविंग थोड़ी ज्यादा ही हो गई है आजकल। हम लोग जैसे ही घर आते हैं थोड़ा खा लेते हैं, तो यस वी विल टेक केयर, हम ध्यान रखेंगे। बहुत सर अच्छा नेक्स्ट है, वन मिनट मैडम, हाँ बहुत अच्छा एक सजेशन करना चाहता हूँ। इवन वी ऑल्सो, जैसे हम घर पे पहुंचते हैं ऑफिस से तो इमीडिएटली कुछ फटाक से खाने का मन करता है। एम आई राइट? हाँ, यस सर। कि जब अभी जैसे हम 8 बजे घर पे पहुंचे, डिनर का टाइम 8:30 है, तो उसके पहले जैसे ही पहुंचे तो जैसे डाइनिंग टेबल पे या तो कोई भी जगह पे हमारा घर में कोई भी जो भी पड़ा है वो खाने को मन करता है, राइट?
So I would suggest all mothers or all female कि that आप अगर कॉन्शियस हो तो आसपास कोई हेल्दी फूड ही रखना, ऐसी कोई चीज मत रखना। वो लोग क्या करते हैं, स्वीट के लड्डू रख देते हैं, या तो चॉकलेट रखते हैं, या तो कुछ भुजिया रख देते हैं, मीन्स सेव रख देते हैं, या ऐसा कुछ तला हुआ चीज रख देते हैं। तो मेल तो क्या है, जो भी मिलेगा वो फटाक से खाएगा, हाथ पैर धो के फटाक से। तो दिस इज नॉट दिस इन योर कंट्रोल। घर जो संभाल रही है वो लेडी, अगर वो ध्यान रखेगी कि जब मेरा हस्बैंड आएगा तो आजू बाजू में ऐसी चीजें रखूं, राइट। हम समटाइम उसको किचन मेक ओवर बोलते हैं। इट्स अ न्यू कंसेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू गो टू योर किचन डीपली, जैसे क्लीन करते हो ना, ऐसे मेक ओवर करो कि उसमें क्या क्या अनहेल्दी चीजें पड़ी है वो सबको एक बार झटके में निकाल दो। एंड जब आप कुछ भी परचेस करने जाते हो तब ऐसी चीजें लाओ कि जो घर में अनहेल्दी चीजें नहीं है। यू गॉट इट? क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइडियल डाइट फॉर द चिल्ड्रन? ये आइडिया अच्छा है आपका कि हेल्दी फूड रखेंगे। हाँ, सी बिकॉज मेल कोई भी, जैसे बच्चे भी है, कोई भी, चलो बेटा है आपका, बराबर है, तो उसको ऐसा कोई चीज तुरंत से ऐसी हाथ में आ जाए जो उसके लिए नुकसान है। हम क्या करते हैं कि वो रेडीमेड फूड के वो जो नमकीन के पैकेट रखते हैं 5-6। मम्मी अभी, आई एम सॉरी बट वी ऑब्जर्व इवन इन द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका ऑल्सो, कि मम्मी जब स्कूल बच्चे को लेने जाती है ना, तो एक पैकेट लेके ही जाती है, तो रास्ते में हाथ में पकड़ा देती है कि ला खाते रहो। तो बेटा चिप्स खाता है, तो उसी बिकॉज बच्चे को मालूम नहीं है एक्चुअली मुझे क्या खाना है। उसको तो भूख लगी है, तो वो तो आप जो दोगे वो खा लेगी, बरोबर है। सो आई एम सॉरी बट मदर हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंटली, बिकॉज it has a effect on their study also and intellectual level also, even their overall health also। अभी जो ओबेसिटी दिख रही है या तो जो भी है वो बच्चों में, वो उसका कारण यही है। So see, the same time, if the children have a habit to eat whatever you give, then he would choose the whatever is tasty for him। हेल्दी नहीं, टेस्टी चूज करेगा, तो वो बाहर भी जाएगा तो कैंटीन में वड़ा पाव मांगेगा कि आई वांट वड़ा पाव ओनली। सो दिस विल नॉट हेल्प हिम टू गिव हिम। फिर हम बोलते हैं फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो वो एक पैटर्न बन जाती है फास्ट फूड खाने की, इसलिए। So तो उनके लिए आइडियल डाइट क्या होगा? Yes, ideal diet is a balanced diet for the children, right? तो जैसे आई थिंक एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि विच इज गुड फॉर द मीन्स विजन के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है। विटामिन ए है, जैसे मैं दोनों कवर कर लेता हूँ ऐसे। सी आइडियल डाइट इज अ बैलेंस डाइट। और जैसे बच्चा कुछ भी खाने को चालू करता है तो उसको तो कुछ मालूम नहीं होता है। तो देर आर सम डिसिप्लिन, जैसे हम साथ में बिठाए, हमारे साथ में बैठ के खाए, हमारी प्लेट में जो है वो ही दे, बरोबर है। वो अगर चालू करेंगे, अगर आप बच्चे को अगर ओनली पोटेटो अच्छा लगता है, इफ ही लाइक्स ओनली पोटेटो, देन डोंट अलाउ, यू गिव हिम करेला एक दिन और बोलो कि आज यही है और कुछ खाने का नहीं है, बरोबर है। यू वोंट बिलीव, बच्चा कोई भी है, यहाँ का है कि लंदन का है, वो एक्सेप्ट करेगा, बरोबर है। सी डोंट गिव द चॉइसेस टू द चिल्ड्रन which are unhealthy। if you give the choices by love or something, I don't know whatever it is, if you give the choices, तो बेटा वही पसंद करेगा जो अनहेल्दी है, जो आपने एक बार दिया है। सो कंप्लीट मील इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे हम लेंटिल दाल खाएंगे तो उसको भी खिलाओ रेगुलर। हम अगर रोटी खाते हैं तो वही उसको खिलाओ। इफ यू आर ईटिंग पनीर तो उसको भी पनीर खिलाओ। सी कुछ चीजें उसको अच्छी नहीं लगती है, ऐसा होता है। बट जैसे कोई देर आर टू टाइप ऑफ मीन्स लेंटिल, तो एक दाल अच्छी नहीं लगती, दूसरी दाल अच्छी लगती है, वो खिलाओ, बट प्रोटीन जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। यस सर। सर एक दूसरा सवाल आया है जो आपने थोड़ा बहुत तो कवर किया है। विद द करंट पैंडेमिक, इम्यूनिटी बूस्टर इज द न्यू वर्ड।
What are your views on this? इम्यूनिटी के ऊपर एक दूसरा लेक्चर आपको अलाउ करना पड़ेगा, फिर भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ. Yeah, immunity is not only that eating, it is your lifestyle. लाइफस्टाइल में जितनी डिसिप्लिन है और लाइफस्टाइल को जितनी आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, इतनी आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है. आपको टाइम पे अवेक मीन्स उठना है, आपको एक्सरसाइज टाइम पे फिक्स टाइम पे करनी है. हफ्ते में 150 मिनट्स मिनिमम एक्सरसाइज इज मस्ट. आपको खाना बैलेंस खाना है, बरोबर है. सी आई डोंट से दैट कि आप बाहर का खाना मत खाओ, खाओ, इट्स अ चीट मील, खा सकते हो, बट आपको वो बैलेंस करना आना चाहिए, बरोबर है. जैसे आपने आज बाहर का खाना खा लिया, उसमें आपकी रोज की रिक्वायरमेंट है 1800 कैलोरी, आपने 2500 3000 कैलोरी ले ली, बरोबर. तो सेकंड डे और थर्ड डे यू जस्ट एडजस्ट इट इज पॉसिबल. It's not like if you are just eating today and the same way tomorrow also you will have a same. आज हमने हमारे घर पे कोई मेहमान को बुला लिया, कल हम मेहमान के घर पे जाएंगे, परसों फ्रेंड्स बुला लेंगे, तो आपके हफ्ते में 4 दिन अगर ऐसे हो गए, तो then you will not be able to build your immunity. So have a disciplined lifestyle, जिसमें मैंने बताया वो पानी ठीक से पीना चाहिए, नींद स्लीप आपकी ठीक होनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए. विटामिन्स में अगर आपको इफ यू आर डेफिशिएंट, so there is no harm of taking that supplements, vitamin supplement with the consultation of a doctor. What are the best food to stock upon? Sir, next question है, what are the best food to stock up during an outbreak? Stock up means what? Stock up means घर पे रखने की बात है. हाँ, घर पे रखने की बात. वो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप बिस्किट घर पे लाके रखना, कि या तो फ्रूट और सलाद घर पे लाके रखना. स्टॉकअप मीन्स वही है जो मीन्स हो सकता है तब तक घर का खाना खाने का, बरोबर, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ. आई थिंक क्वेश्चन इज लिटिल ट्रिकी, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ. सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शुड ब्रेकफास्ट इंक्लूड मोर न्यूट्रिशियस फूड और डिनर? माय आंसर इज बोथ. न्यूट्रिशन बोथ द टाइम इम्पोर्टेंट है, बट ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है. बहुत लोग ऐसे हैं जो उसकी शुरुआत चाय से करते हैं, बरोबर है, या तो कॉफी से करते हैं. सो वो आपका मेटाबॉलिज्म कम कर देता है. उसके बदले आपको फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ऐसे अगर इफ यू स्टार्ट योर डे देन इट विल बी मोर हेल्पफुल. सो ऑब्वियसली बोथ, मेरे हिसाब से मेरे जवाब है दोनों में आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए ब्रेकफास्ट और डिनर में, बट ऑलमोस्ट इन ब्रेकफास्ट तो वो मस्ट है. सर ब्रेकफास्ट में बच्चे को हम यूजुअली बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स ऐसा दे देते हैं, दूध में केलॉग्स दे देते हैं, तो डू यू थिंक इट इज राइट? There is no problem. See, I am not favoring or not means denying to just these powders, right? But मेरा ऐसा है कि breakfast before the your means children start working, they should have enough or good nutritious breakfast. ये इसका नाम ही ब्रेकफास्ट है, बिकॉज आपका अगले दिन का फास्ट है वो आप ब्रेक कर रहे हो, बराबर है. सो प्लीज डू समथिंग सो दैट बच्चा है वो अपना स्टडी चालू करे, उसके पहले उसका खाना ठीक हो जाए. मीन्स एटलीस्ट जो क्वांटिटी में वो चाहता है वो दे. बट फ्रूट्स है, या तो ड्राई फ्रूट्स है, या तो ओट्स है, या तो कॉर्नफ्लेक्स है, जो भी देते हो वो कुछ दे दो उसके साथ में. Cooking is microwave as same as normal cooking? I would say no, because these are all fancy things which will see.
अगेन दिस कम्स इनटू द चीट मील। अगर ऐसा नहीं है कि आप रोज माइक्रोवेव में पकाओगे तो वो बराबर नहीं है, राइट? बट इफ समथिंग विच सम डिश विच इज माइक्रोवेव से बनती है तो उसके लिए ओके, आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम। बट वो यानी आपका हर रोज routine का हाँ, वो ऑप्शन नहीं है आपका, जो आप बनाते हो रूटीनली, उसका ऑप्शन नहीं है ये। अच्छा, ओके। सो माइक्रोवेव डिशेस दैट आर माइक्रोवेवेबल उनको खाना चाहिए, पर रेगुलर डिशेस को माइक्रोवेव करके नहीं खाना चाहिए। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? हाँ, यस। ओके, ओके। क्योंकि आजकल ना दूध भी वो लोग माइक्रोवेव करके पी लेते हैं। बरोबर है। तो अभी देखो, सी ये चीजों की जितनी हमको आदत नहीं है वो अच्छा है, बरोबर है। जैसे पानी गर्म करना है तो भी फिर भी माइक्रोवेव में करके दे देते हैं कि ये मीन्स वार्म वाटर देना है तो माइक्रोवेव में दे दिया करके। कुकिंग इज माइक्रो। अच्छा, व्हाट इज सर्टेन कंपनीज लाइक, व्हाट इज दिस? हाँ, ये certain companies like Amway, Herbalife provide protein shakes. And tell us to skip lunch, dinner. So do these shakes have nutritional value? ये थोड़ा एक ऐसी चीज है कि जिसमें हम बात नहीं करें तो अच्छा है। आई डोंट से इट इज बैड, बट इससे अच्छा है कि आप पोर्शन कंट्रोल कर लो, राइट? अगर वेट लॉस की बात चल रही है तो उसमें पोर्शन कंट्रोल, जैसे आपने ये शेक पे लिया, बरोबर है, और दूसरे मील में आप कोई कंट्रोल नहीं रखोगे तो उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, बरोबर है। उससे अच्छा है कि आप बैलेंस कर लो, इट इज गुड, बट इफ यू कंटिन्यू इट प्रॉपरली विद द एडवाइस ऑफ प्रॉपर डायटिशियन और प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट, देन इट्स ओके। बाकी तो क्या है कि जैसे आप मीन्स सेल करने वाले ने अगर आपको एक बार दे दिया तो इफ यू आर टेकिंग इट, बट वो शाम को फिर और अनदर 2 meals व्हाट यू आर ईटिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो इफ यू कीप ए डिसिप्लिन देन इट इज ओके। Oh, okay, sir. Then there is another question, sir. Which food can improve vision? Yes, I was just trying to cover in between that vitamin A is considered very good, means vitamin कैरेटोइड जो बोलते हैं, जो वो हमको हमारे बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है विटामिन ए। और विटामिन ए के लिए उसको जो कलरफुल रेड एंड येलो कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो खास देने चाहिए वो लोग को। उसमें विटामिन ए बहुत अच्छे है, बिकॉज जब आप देते हो तो वो प्रीकर्सल कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, वो डायरेक्ट उसमें नहीं है। विटामिन ए किसी फ्रूट वेजिटेबल में नहीं, बट प्रीकर्सर होता है, उसके बाद में वो कन्वर्ट होता है। तो क्वांटिटी अच्छी देंगे। रेड एंड येलो याद रखना, जो भी फ्रूट वेजिटेबल आता है वो देंगे तो विजन अच्छा रहेगा। And same way, iron is also very much important for the school going or children. Third is protein is also very much important for the school growing children, because उस टाइम पे मसल बिल्ड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग होता है। उस टाइम पे अगर प्रोटीन का इंटेक कम रहेगा तो बच्चा वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। सर थैंक यू सर, ये वी गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपने बहुत सारी चीजें हमें शेयर की है। आवर डायरेक्टर मिथुन सर of Divya Jyot School would like to come in and have a please. Hello and good evening, sir. Shri so I welcome our director. Yes, Preeti ma'am, how are you? And hello Nilesh ji. It is a wonderful webinar that we are sir जितनी भी बातें आपने कही हैं वो almost हम ध्यान में रखेंगे। Yes sir, welcome sir. Yes, Preeti ma'am. I think my audio is a little delayed, but I was just telling that to Nilesh sir and also to Preeti ma'am that since almost 1 घंटे से we are listening to the wonderful information from the expert,
एंड बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर है जो पेरेंट्स और हमारे ऑडियंस पूछ रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है प्रीति मैम कि आपका टाइम, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम लिटिल, so we would request Nilesh sir to take a little more efforts and help us in replying to the comments. That will be really helpful क्योंकि सबको देख पाएंगे, सबको वो पढ़ पाएंगे. And personally, I loved the few ideas which sir already said. One was the kitchen makeover was a wonderful thing, a new concept. Yes. एक झटके में सब चीजें फेंक देना will be definitely a challenge, but I think we all can try that. And घर पे आते ही जो healthy snacks रखने वाले दोनों आते, I would like to implement myself. As a part of our knowledge free webinars, we always bring in the experts, and the audience is always getting to know about topics which affect them, which are more relevant to the adults as well as the children. And I'm really thankful and happy that you conducted a session for the whole audience, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए. So once again, on behalf of our team, I thank you and really appreciate your efforts and time. And Preeti ma'am, you also handled the webinar very nicely, so compliments to you as well, and entire team who is working on the back end as well. To the parents, tomorrow is Teacher Day, and consider this as one more gift from our teachers to you and your children for healthy lifestyle ahead, and I'm sure that we all will benefit somewhere by implementing these changes in our life. So thank you once again, and everybody have a good night. See you next time with another wonderful webinar. Stay in tune for the announcements. Thank you all and have a good night. Thank you very much, Mithun sir and madam. I have one thing to just tell you finally. So this initiative is really much more appreciated. You are so much concerned for the society, your teacher and your student and parents for this such a very much important topic to cover. Now, from on behalf of Shelby Hospital, I have my marketing head with me, Pawan. I would request him that for your children, your school children, on teacher and parents, we will have a special discount on their wellness assessment or the health checkup and all. He will just come and just meet next week and offer you that also, specially. We would certainly be happy to extend that proposal and also to our parents. And in general, in our school, we always conduct the sessions by Shelby. हमारा health checkup हर साल होता है. Since 1.5 years, it has been difficult with the COVID. So yes, we are also looking forward to have the checkups once again, once the little more relaxations are given to the schools and the operations. Yes, we'll be And in touch with your team as well, sir. Any listener have a personal question, you can take my number from madam and just or through madam, you can just contact me, no problem. We are always, you are always welcome. Thank you very much. Thanks. Okay. Thank you all, Thank you, sir. and bye and have a good night. Thank you. Good night.